बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला, जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है, और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभास्करन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ஆதித்த கரிகாலன் இந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒரு ஒற்றை. The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जोरदार तालियां। और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के जज्बे का दुखते रहना। A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है, और फिल्म के निर्देशक Director of the film Shri Mukesh Gautam also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है। जेपी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ना, ये लोक मान जीवन बचाऊँ आ लोक मान सुरक्षित शुएगा हेले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Orissa. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है। और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है, तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार। और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म सऊदी वेलाका CC.225/2009 का चयन किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन, जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान।
भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है। சிறந்த நடனத்திற்கான விருது கூட சதீஷ் கிருஷ்ணன் இந்த மேகம் கருக்கார அந்த பாடலுக்காக அந்த தேசிய விருதை பெற்றிருக்கிறார். அதே போன்று தற்போது இந்த தமிழில் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்திற்காக 4 தேசிய விருதுகள், அதாவது சிறந்த பின்னணி இசைக்கான அந்த தேசிய விருது, சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான தேசிய விருது, சிறந்த ஒளி வடிவமைப்பிற்கான அந்த தேசிய விருது, சிறந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான அந்த தேசிய விருது என 4 தேசிய விருதுகள் இந்த பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் சிறந்த அந்த தமிழ் திரைப்படத்திற்கான அந்த தேசிய விருதினை இயக்குநர் மணிரத்னம் மற்றும் தயாரிப்பாளர் சுபாஸ்கரன் ஆகியோர் அந்த விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றனர். இந்நிலையில் தொடர்ந்து இந்த 3 விருதுகளையும் அந்த பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்திற்காக படக்குழுவினர் ஒவ்வொருவராக பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क्स एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। आ जाओ, छोड़ देता हूँ। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar, again receiving the Silver Lotus. तो फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardhan, Shri Surinder Singh receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লক্ষণ পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। हानी फाले पूरी का पूरी फॉर्म होता तो पुनू मास होत नाही। मानवीय महत्वाकांक्षाओं और उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुथी पुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, there's a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment. And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving the Silver Lotus.
एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया। फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी। And now for KGF Chapter 2, Shri Arvumani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together? Ladies and gentlemen, the film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Shri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Tiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है। प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है। To the breathtaking visual effects, Brahmastra tells the story of a young man, Shiva, and his mission to protect a weapon of enormous energy from dark forces. और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर श्री विरल ठक्कर को भी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल का सम्मान। As we put our hands together, the film recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. और इसी टीम के श्री नीलेश गोरे सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से एक आदर्श मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें भारतीय महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को भी निर्बाध तरीके से जोड़ा गया। An award for the गीतकार नौशाद सदर खान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों के जज्बे को अपने गीत में शब्दों के माध्यम से बखूबी पिरोया है। On to the next much awaited award for the best music direction background score goes to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोरदार तालियां। Award now for the best music direction songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi. For the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जोरदार तालियां। Award now for the best music direction songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार,
7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जोरदार तालियां। Award now for the best music direction songs being presented to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend. Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelamadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliar ji, Dada Saheb Phalke awardee, हम सब के चहेते मिथुन दा, jury members, all the award winners, friends from the media, and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का, I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, वाजपेयी जी. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithun Da for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार, और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में, इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी, और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें।
By now, more than 5,000 participants have already registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई क्रिएटर्स इकोनॉमी की जो रेल्स है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for, very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technologies, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's where that's the cultural capital, that's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country which will be like IITs, like IIITs, like IIMs and like AIMS. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country but also win over the media and entertainment world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development. And we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I'm told, I'm new to I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy. And IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design
a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world in so many different sectors. Now time has come when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background or some very nice archives or some nice archaeological places in the background or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start creating, start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry, and we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasoon Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together, we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, friends, taking the special evening forward, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward to confer the next set of awards for feature film category. The award for the best makeup goes to Shri Somnath Kundu for the Bengali film Aparajito, receiving the Silver Lotus. You can see in the visuals an inspired and imaginative makeup that brings characters come alive on screens. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the artist. प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए मशहूर श्री सोमनाथ का ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस निकी जोशी। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए आप प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। ये स्टोरी नहीं खबर था मैंने। बढ़ते हूँ चलाओ। हाँ बाइक। આ ભાઈઓનું કામ નહીં। દે બુલેટ તને ખબર પડે? Kutch Express has taken great care to incorporate the minute intricacies of the folk world of Gujarat in its costumes. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार बंगाली फिल्म अपराजितो के लिए श्री आनंद आध्या को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है।
never seen a movie like this. In the film, you witness a lifelike ambience and meticulous handling of various visual components that bring the era alive on screen. जीवंत माहौल विभिन्न दृश्य तत्वों के कुशल प्रबंधन के लिए पर्दे पर उस युग को जीवंत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड मिल रहा है मलयालम फिल्म आटम को। श्री महेश भुवनेन्द्र प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The remarkable use of silences and its control over the film space at the same time shows the maturity of the editor in the film. मान्यवर बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 चयनित की गई है और साउंड डिजाइनर श्री आनंद कृष्णमूर्ति रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। जिनमें युद्ध की तीव्रता के साथ साथ मौन का साइलेंस का कुशल समन्वय चोल साम्राज्य को जीवंत कर देता है। फिल्म ने वर्ष 2022 की लिस्ट में सबसे अधिक 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। The award for the best cinematography goes to Shri Ravi Varman for the film Ponniyin Selvan Part 1, being awarded with Silver Lotus. ಆದಿತ್ಯ ಕರಿಕಾಲನ್ ಎಂದನೇರ Exotic visuals, captivating frames, angles and movements lend the script a poetic appeal that we witness on the screen. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार पा रही हैं मलयालम फिल्म साउदी वेला का CC.225/2009 के लिए मिस बॉम्बे जयश्री रामनाथ। आपको रजत कमल का सम्मान। शास्त्रीय गायन की विलक्षण प्रतिभा से सजी आवाज जो गीत की भावुकता को भी समेटती है और जीवन संघर्षों को नए अर्थ भी देती है। 40 years of Srimati Bombay Jayashree. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, with all the energy we can. पुरस्कारों के क्रम में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार पा रहे हैं श्रीपत पीके, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मलयाली फिल्म मलिकापुरम के लिए बाल कलाकार श्रीपत पीके को रजत कमल। Happy birthday, Shripat. The adventure of a small boy with a sense of humor, courage, timidness, and lively performance that touched the chord with all the viewers. सबसे छोटी उम्र के अवार्डी के लिए सबसे अधिक तालियां। An award now for the best actress in supporting role conferred to Miss Neena Gupta for the film Unchai, being awarded the Silver Lotus. ये सेटिंग किसी ट्रैवलिंग कंपनी की है या प्राइवेटली तुम्हारी? जिंदगी भर तुम्हारे लिए जीती रही। नीना गुप्ता ने अपने अभिनय कौशल से मानवीय रिश्तों के ताने बाने को संवेदनाओं की गहराइयों से जोड़कर बखूबी प्रस्तुत किया है इस फिल्म में और हासिल किया है अपना 3रा नेशनल फिल्म अवार्ड। And now the best actor in supporting role award. The award goes to Shri Pawan Malhotra for the film Fauja, being recognized with Silver Lotus. मेरी 10 पुश्तों ने भारत मां की सेवा की है। मैं एक अभागा हूं सर जी, बहुत कोई नहीं सुना चाहता। अपने बेटे को सेना में भर्ती कराने की इच्छा रखने वाले पिता के देश प्रेम को पवन मल्होत्रा ने पर्दे पर जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्राप्त कर रही हैं मिस मानसी पारेख गोहिल। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिल रहा है
कच्छ एक्सप्रेस को ही और फिल्म की निर्माता भी हैं मिस मानसी पारेख गोहिल, जो ग्रहण कर रही है 2 पुरस्कार। आपको रजत कमल का सम्मान। રિસર્ચ પણ તમારી જોડે આખી દુનિયાએ જોઈશ. આને ડ્રીમ કેચર કહેવાય. આ તારા સપના પૂરા કરવામાં તારી મદદ કરશે. જે મારા ભૂલ છે. The filmmaker is recognized for delicately illustrating the character of a suppressed housewife brimming with immense hope and untapped talent. The best actress in leading role now goes to Miss Nithya Menon for Tamil film Thiruchitram Balam, being conferred the Silver Lotus. Miss Menon being recognized for her skillful portrayal of character, sacrificing her own love for greater good, capturing the essence of selfless devotion. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए प्राप्त कर रहे हैं श्री सूरज आर बड़जात्या। आपको स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से इस प्रेरणादायक फिल्म में श्री सूरज आर बड़जात्या ने एवरेस्ट बेस कैंप की प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ कुशल संपादन, मजबूत पटकथा और भावुकतापूर्ण दृश्यों के माध्यम से बेहतरीन निर्देशन प्रस्तुत किया। Shri Suraj Bajatiya occupies a shining spot in the history of Indian cinema. Time now for the best film in animation, visual effects, gaming and comic category. The award goes to Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva. Shri Karan Johar receives the Golden Lotus Award on behalf of Dharma Production Private Limited, Star Studios, Prime Focus Limited and Starlight Pictures. क्यों जुड़ा हूं मैं गुरुजी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र। ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी वीएफएक्स प्रस्तुतियों में से एक। फिल्म में 4500 से अधिक वीएफएक्स इफेक्ट थे, जो संभवतः विश्व स्तर पर किसी फिल्म में सबसे अधिक वीएफएक्स का रिकॉर्ड था। And for the film, Best Film in AVGC category, award goes to director Shri Ayan Mukherjee for the Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva, being awarded the Golden Lotus. The filmmaker being recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कच्छ एक्सप्रेस के नाम। फिल्म के निर्देशक श्री विरल शाह को रजत कमल। आशु जॉनी द कैटरपिलर इनी स्टोरी नहीं खबर था मैंने। कैटरपिलर पेट में पानी हलતું નથી। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस परिवार को केंद्र में रखकर एक महिला का संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। Award now for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Kannada film Kantara. Shri Vijay Kiragandur on behalf of Ombale Films LLP receiving the Golden Lotus. रेडियो सज्जनों, होम्बाले फिल्म्स के लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि फिल्म कांतारा और KGF 2 दोनों प्रोडक्शंस को मिले हैं दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। And staying with Kantara, I invite the director of the film, Rishabh Shetty, to receive the Golden Lotus. He also receives the award for the best actor in leading role. कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गढ़ी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है और बंद विचारों की खिड़की भी खोलती है। ऋषभ शेट्टी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
प्रदान किया जा रहा है और साथ ही कांतारा के निर्देशक के तौर पर भी ग्रहण किया पुरस्कार। Ladies and gentlemen, all great journeys begin with a debut. The Golden Lotus Award for the best debut film of a director being conferred to Shri Pramod Punhana for the film Fauja. निर्देशक प्रमोद पुन्हाना ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी काबिलियत साबित की। एक परिवार की सेना में शामिल होकर देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयासों को आपने शिद्दत से इस फिल्म में प्रस्तुत किया और बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आटम को मिल रहा है। फिल्म निर्माता जॉय मूवी प्रोडक्शंस LLP की तरफ से श्री अजीत जॉय के स्वर्ण कमल का सम्मान प्राप्त करते हुए The film Atom explores the ugly facades of society through a crime against one of the women performers in a theatre group, a play of empathy, love, jealousy, anger, remorse, and quest to remain ahead. And the award for the best screenplay original also goes to Malayalam film Atom. Director and screenplay writer Sri Anand Dekarshi been conferred with Golden Lotus. An intentionally simple narrative that skillfully unravels a complex web of deceit, all within the confines of a small, intimate setting. आटम एक रंगमंच समूह की महिला कलाकार के खिलाफ हुए अपराध के माध्यम से समाज के एक कटु पहलू की पड़ताल करती है। At this point, thank you, Honorable President, for presenting the awards. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हम सबके चहेते ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित अभिनेता पद्म भूषण से सम्मानित श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। हिंदी सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Ladies and gentlemen, Sri Mithun Chakravarti is here as we move on to the presentation of this much-awaited Dada Saheb Phalke Award. Let's play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema. The fans like us call him Mithunda. बंगाल की जीवंत गलियों से मुंबई की चकाचौंध तक का ये सफर एक कहानी है गौरांग चक्रवर्ती की बुलंदियों तक पहुंचने की, जिनको देश और दुनिया मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। Gauranga is my birth name, but then from the college side, I was a very popular guy. They used to call me Mithu. Mitas and Mithas, Mithas and Mithun. The sweet, sweetest, sweetest is Mithun. 1976 में फिल्म इंडस्ट्री में आए मिथुन को अपनी पहली फिल्म मृगया में बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तुमको भी शिकार पसंद, मुझको भी शिकार पसंद। तुमको देना अच्छा लगता है, तो शिकारी है ना। लेकिन उनके स्टारडम को इंतजार था 1982 का, जब रिलीज हुई डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को कमर्शियल सिनेमा में स्थापित किया।